Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Amin. Okay, so this is a book. It's basically a photo album. It's going to would be photos. Cars can just 3-4 right relatives interpret करने की कोशिश करता है. And so this is the summary of how I divided the book. उसपे आगे जाके बात करते हैं. So this is that, and basically इस किताब ये 3 series and 3 books हैं. This is the third one, Love Thyself, The Message from the Water Tree, Volume 3. इससे पहले Volume 1, Volume 2 की बात हुई है. And these are his other books, The Message from Life, What Water Tells Us, Water Knows the Answer, Volume 1, 2, Crystal Story, The True Power of Water, The Shape of Love, That Water Tells Her, Water Listens to Music, and so on. And the humble request, being mindful, ittaqullah, have an open heart, because heart is the first thing, you know, and keep asking hidayah from Allah subhanahu wa ta'ala. And ears and eyes, then yasmi, basir, and the mind, you know, हम जाके mind पे attack करते हैं. उससे पहले हमें अपने audience को experience देना होता है. इंसान को सारे दो लोग बात कर रहे होते हैं आपस में. So, and then again, the intrinsic, extrinsic, and whole two parts, जैसे अंदर से वैसे बाहर से, that make us our purity, you know, कि एक इंसान कितना pure है, wickedness versus purity. And then that thing, take away one thing, write it down, and let's bring that into amal, just not, you know, हर चीज को सुनते ना जाएं, or, you know, जिस तरह और इतनी videos scroll out करते हैं. And just again, humble request. And basically, what we research is based on books, online sources, but and it's done in good faith, but it may contain the margin of error. So take the good, leave the bad, and just a thought-provoking question: what history means to you? How will you define it? If you break the history word, you know, in hey and story, so high story, the story lies. Interesting. So this is the how its contents are working. So with this first yellow portion we're gonna be doing today, and the rest मैंने फिर इसकी chapter 4 follow नहीं किए. मैंने Islamic crystals, Islamic based जैसे बिस्मिल्लाह, यालीन, उस पे separate किए हैं, और फिर क्या कहते हैं number symbols. There was one song, and human cloning. There was another documentary reference best way, and there was nature symbols, you know, waterfalls. Uski base pe that would be second part. Last part would be on the basis of EI ke jo words hain, the emotion stuff, the positive, negative word, the peace, for example, peace versus war, us tarah ke, and the words. So the first one, preface, message from water. He keeps going to this book, Messages from Water, you know, just series his first book, I guess. And so what he talks about is, you know, water से जो हम link कर रहे हैं, water हमें कहाँ कहाँ क्या कहते हैं उस interpretation में मदद दे रहा है. For example, he talks about okay, what these 10 points applies to our daily routine. For example, water is a common language. Even 2% don't have the same language, but when they see that water crystal, you know, जब आप उसको देखते हो, so you can understand it. And then the ability to speak, the mind, water has the ability to speak, and the water has this awakened subconscious memory, you know, okay, it's not just that thing, it is जो आपको रीड कर रही है, आपके अंदर को भी आपके बाहर को भी, चाहे वो आपके अंदर का वाटर है, द 4 फेज वाटर, चाहे वो आपके बाहर आपके डेस्क, आपके साइड टेबल पे कहीं पानी का जग पड़ा है या ग्लास पड़ा है. And then the water sound healing therapies जो effective है, and ancient civilizations भी sound healing करती थी. So that thing is a, and then water is teaching us, you know, even the art, the sculptures, the paintings, everything has a deeper meaning. There are layers. And then the link between religion and prayer, and how do you pray, you know, ऐसे pray कर लेते हैं, hands कैसे hold करते हैं, वो इसके last chapter में आएगा.
आपने जस्ट दूसरों के हैंड्स पकड़े हुए लाइक रिंग रोजेस की तरह, और आपने अपने हैंड्स आपस में किए हुए हैं. सो her region का different एक अपना style है. And then the humanity and cosmos and water relation, and then the water comprehending, interpreting the link between the nature, energy, the dimensions, and then the water eternal theme of humanity पे जो रोशनी डाल रहा है कि where we came from, why we are here, and where we are going after dying. So yeah, so okay, here this is finished. Then he talks about this one. He talks about Masaru Emoto. He talks about we must shine with positive high spirit vibrations full of love. First we have to come to the positive state, and then we have to be speak positive way to ourselves. So that is the step number 2. Love yourself, be able to love yourself, thank yourself, respect yourself. And the third is जब आप positive पे आ जाओगे अपने आप से भी true to yourself, फिर दूसरों की जगह true to others होगे. So and being able to just कहना and being able to do that are two different things. तो फिर वो आपकी vibrations, once you set it, फिर वो आपकी vibrations बाहर जाएंगी, cosmos में जाएंगी, and then it will because it needs same frequency to resonate. So then it comes to the introduction. He basically says this book is a photo album, and आपसे request है कि इस पे wonder करें, think करें, contemplate करें, आपको वो shape कैसी नजर आती है. And then he starts talk with MRA, which is magnetic resonance analyzer. वो फिर अपनी story से start करता है. He was 43 years old back in November 1986. तो क्या कहते हैं, he obtained the low frequency medical therapy equipment in United States. So वो California आता जाता रहता था, and he was an independent sales agent, and he established उसने 1986 में establish की international health medicine. And इसका जो state side counterpart था, that was Dr. Lee Lorenzo. ये first book में आए थे, I believe. And उन्होंने बाद में जो काम किया था, actually he was finding the cure for his wife, और उनका जो काम था उन्होंने बाद में microcluster water की तरफ गए थे. फिर वो कहते हैं दूसरे उन्होंने मसारो इमोटो जो मेन राइटर मेन बुक के, उन्होंने जो प्रॉब्लम उस वक्त नोटिस की, दैट वाज दिस कि वाटर को एनालाइज करने के लिए, टू वाटर के कंटेंट्स है उसको मेजर करने के लिए इक्विपमेंट्स हैं, बट कोई ऐसे इक्विपमेंट नहीं है जो वाटर की क्वालिटी को करे. अगेन क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी. Then he talks about the biocellular analyzer. Biocellular analyzer उस पर कोई जूनियर मिस्टर रोनाल्ड काम कर रहे थे उसके ऊपर, पर उनका जो पर्पस था वो बेसिकली था to develop homeopathic remedies. And then he was like something just out of the it just struck him. और उन्होंने वो 3 biocellular analyzer 3 buy कर लिए, and then we went back to Japan. Then the writer changed the name, MRA, magnetic resonance analyzer, and what he did उसके बाद क्या कहते हैं कि बेसिकली ये मशीन क्या करती है, इसका फंक्शन है ये मेजर करती है imbalance of vibrations within the body, और यानी in other ways the vibrations which is वो writer भी use करता है word HADO is equal to vibration. And then he उस वक्त कोई restrictions थी जापान में, so he experimented on the microcluster water जो again Dr. Lorenzo ने बनाया था, and he cured the illness 7 years. वो यही काम करते रहे. And then he wrote these books, Introduction to HADO Humanics, and HADO Cytology. But ये इतनी नहीं हुई famous. तो उन्होंने सोचा कि ऐसे क्या मैंने किया है कि लोग इसको क्यों नहीं समझ रहे, ऐसी क्या hindrance आ रही है. So then he was like, he realized people don't believe what they can't see. It is thanks to science. And then determined, so उधर से he was determined, the writer, कि अब वो इस एक्सपेरिमेंट को इस वे में करेंगे कि वो वाइब्रेशंस नजर आए. So again, so it's a quote from like a Star Wars, but it makes sense. Kind of your focus determines your reality. So the more we are focused on one thing, the more we are near to that achieving that reality. Is that so? What do you say? And then he comes back to frozen water crystal photography, कि उसको ये idea कहाँ से आया था. His whole books, his whole stuff work is based on this. So he says कि now back to 1994 summer में बात है कि he was just killing the time. He went to the bookstore and he bought this book, The Day the Lightning Chose the Housewife and Other Mysteries of Science. And then he just wrote this, he read this sentence. He was like, the idea just came just like that. There are no two snowflakes that are alike.
And then he was like कि अगर मैं because snowflakes are frozen states, so अगर water को freeze करे, और जब वो freeze करेगा तो वो crystal बनेंगे, तो अब वो before and after उस vibration के whatever आपके words हैं, जो भी आप उसको बोल रहे हो, जिस भी treatment के अंदर आप उसको कर रहे हो, तो वो करे तो he was like, so he can show that. Remember, जब उसकी इन 3 books में problem थी कि people don't believe what they can't see. So he wanted to show that crystals, that difference to aura, and that's where his determination took him to. So again, his really big point is that purity is an absolute requirement for people who study water. And is this purity के दुआ से भी link करती है? Just a thought-provoking question to you all के जितना ज़्यादा प्योर होंगे, नेचर के करीब होंगे, सो तकवा का रास्ता के करीब है, एंड द रूफ वाला, द पॉजिटिव वाला, एंड उतनी ज़्यादा आपकी दुआएं, आपका जिस तरह अलिया वगैरह होते हैं, वो वाला रास्ता आसान होगा, या आप अल्लाह के उतने ज़्यादा करीब होंगे. सो व्हाट डू यू से? बिकॉज जैसे जैसे जब बच्चा पैदा होता है उसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, आहिस्ता आहिस्ता जब वो बड़ा होता है उसमें वाटर की क्वांटिटी कम होती जाती है. And so kids, वो बच्चे, they are also in pure state. फिर हमारे वो सिन्स आते हैं, फिर जो हदीस का मफहूम कि हर गुनाह के साथ आपके दिल पे एक ब्लैक डॉट लग जाता है. So just the same. And then for his first book, June 1999, Messages from Water, was released. And then he's just sharing, उसकी journey, one researcher, one refrigerator से start हुई थी, and it went to 6 researchers, 3 refrigerators. And this is the first crystal picture that he took, his staff took. And then he's like, okay, a modern life lost in a maze of confusions. So when you get lost, what should you do? Return to the starting point back. Where is the starting point? Our existence itself. Where is the existence? In ourselves, the energy that created it. And what is that energy? Was it that कि हम इस दुनिया में बने हैं, ये हमारी जर्नी आलम अरवाह से स्टार्ट हुई है, लस्तु बिरब्बिकुम, what was the purpose, जो हमें अल्लाह ताला से वो प्रॉमिस किया था. So linking up all that, so let's come back to the energy, vibration and life, कि वो कह रहा है कि एनर्जी जो क्रिएट होती है वो उसका डायरेक्टली लिंक है. वाइब्रेशन हो गई, एनर्जी है, वाइब्रेशन है, तो लाइफ है. So because everything is made up of atoms, vibrations and nucleus. आखिर में वो जो पढ़ेंगे ना इंट्रोडक्शन का लास्ट, उसमें मेंशन करता है, वो फिजिक्स के वेव मोशन वाली बात नहीं कर रहा, वो हार्डो को वाइब्रेशन के सेंस में सिर्फ ले रहा है. एंड देन ही गिव्स द एग्जांपल ऑफ हार्ट. जब आपका बीटिंग, हार्ट बीट स्टॉप हो जाएगी, देन यू आर डेड. सो अगेन एटम पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस. देन इसे एक प्रॉब्लम है. वो प्रॉब्लम क्या है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है ना, हम इंसान ऑर्गेनिक मैटर के बने हुए हैं, तो उसकी जो वाइब्रेशन है ना, इट कांट कीप मूविंग ऑटोमेटिकली, हमेशा इन्फिनिट लूप में नहीं हो सकती. ठीक है. सो टू कंटिन्यू द वाइब्रेशन इट नीड्स अ थर्ड पार्टी. इधर आके एक न्यू टर्म की इंट्रोडक्शन होता है, वो है रेजोनेंस. रेजोनेंस क्या है? इट्स अ फिनोमिना दैट क्रिएट्स कंटिन्यूस वाइब्रेशन. अब वो कंटिन्यूस वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन के लिए क्या होगा? अब वो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस बताता है कि फर्स्ट इज द मैच फ्रीक्वेंसी क्रिएट सिंपैथेटिक वाइब्रेशन. सो तो ईआई पार्ट भी आ गया, and destruction versus construction, and the pure waves reach farther. Again, वो part भी आ गया. So the first characteristic of resonance. Either again the tuning fork comes in 440 hertz, 440 hertz, 442 hertz. And what he says is, the sympathetic से वो वाला point भी कि जब हमें गुस्सा आता है, तो हदीस में 2 हैं, जिसका मफहूम है फर्स्ट वन कि पानी पिए. ठीक है. सेकंड है कि अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं. सो इन दोनों को अगर आप साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्या हो रहा है आपके अंदर, वो क्रिस्टल में क्या चेंजिंग आ रही है, वाटर में क्या चेंजिंग आ रही है. वो गुस्सा, वो जो फॉर एग्जाम्पल लास्ट बुक में था लेड एलिमेंट से लिंक है, वो पानी के H2O उसके ऊपर क्या असर कर रहे हैं. और उससे अपनी कहीं एक और जगह भी लिंक था, आई गेस वो न्यू बुक में आएगा, लीवर के साथ. सो डू चेक दैट. And he says, so the same frequency है,
for 40 hertz वाले they are resonating, you know, but resonate की शर्त यही है दोनों सेम पे हो और फिर वो resonate करेंगे, but जो सिर्फ 2 hertz के difference के साथ है वो just slightly buzz करता है, just slightly buzz. So the point to take from here is कि हमारे ear ने उन 2 hertz को भी difference को सुना है and we observe कि resonate completely नहीं कर रहे. So the point is कि slightly बहुत slightly 2 hertz are slightly variation and deviation of frequency भी resonance की possibility को reduce कर देती है. Eventually vibration क्या होगी, खत्म हो जाएगी, stop हो जाएगी. So vibration, energy, life resonate only with the same frequency. Now a point here is आप इसको सिर्फ tuning fork पे ना apply करें, आप इसको अपने ऊपर apply करें. आप ऑफिस में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, लाइब्रेरी में हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं, जहाँ मर्जी है, लाइफ के जिस मर्जी शोबे में है, आप कहाँ रेजोनेट कर रहे हैं, किसके साथ सेम फ्रिक्वेंसी है, उससे पहले जानना होगा आपकी क्या फ्रिक्वेंसी है और आप किसके साथ रेजोनेट नहीं कर रहे, यू नो, वो जो टू इज, यू नो, वो बंदा कमरे में आए, ओके मैं तो बस भाग ही जाऊँ कहीं. ओके, उसके बाद नेक्स्ट अब वो कहते हैं जो रेजोनेंस करेक्टरिस्टिक है, ये जो मैचिंग फ्रिक्वेंसी थी, सिंपैथेटिक वाइब्रेशन है, अगेन सिंपैथी ई है, उसके साथ भी आप इसको लिंक करें, ठीक है, बिकॉज जो इंसान, जो लोग प्योर होते हैं, जो अंदर से और बाहर से एक जैसे होते हैं, यू नो, एंड व्हेन यू आर sympathetic person, तो that humbleness, that humility, you know, so everything has a, you know, opposite, and the point is आप कौन सा चूज करेंगे, पॉजिटिव को चूज करेंगे या नेगेटिव को. उसके बाद रेडियो फ्रीक्वेंसी यूजेस सेम फ्रीक्वेंट रेजोनेंस प्रिंसिपल, और इधर वो क्या बात, अच्छा इधर द ELF एंड VLF. इसके बाद इस बुक में एंजल्स डोंट प्ले दिस हार, अब इसमें एक्सप्लोर करते हैं. आवर पॉइंट इज दिस AM रेडियो, FM रेडियो, यू नो, जो रेडियो वेव्स हैं. तो वो कहते हैं ये जो वेव्स है ना, उसमें भी ये होता है जब आप ट्यून इन करते हैं रेडियो स्टेशन, जस्ट टेक एग्जांपल 94.6 FM, तो आपका जो रेडियो है इधर से वो उसकी, यू नो, तलाश में निकलता है, उस सिग्नल को सर्च करता है और उधर से क्या कहते हैं जो वो ऑफिसर जो FM स्टेशन है, रेडियो स्टेशन है, वो मिट कर रहा होता है वो फ्रीक्वेंसी. सो बोथ आर एट सेम फ्रीक्वेंसी, जस्ट लाइक दैट, फॉर 40 हर्ट्ज. तो फिर वो आपका वो चैनल ट्यून इन हो जाता है. और अगर आप वेव्स में जाओ तो इधर क्या हो रहा होता है, वेव्स की शॉर्ट एंड मीडियम, जो रेडियो वेव्स हैं, देयर आर शॉर्ट एंड मीडियम वेव्स, and it has the broadcasting capabilities. So the wavelength है, जो wave का क्रॉस सेंटर के बीच में length है, and it determines the distance of reach, कितना distance ये cover करके काम पहुंचेगी. Again the point is the shorter wavelength reach the farther because उनकी energy stronger होती है. So अब the question है shorter wavelengths कहाँ use हो रही है. So what he says, like he's writing this book maybe 1999, something like that. So wireless international communications, GPS receivers, wireless clock, garage door openers, and so on. Then he comes up to the resonance of pure water का second part, where he says here is, you know, the purity के साथ link कर रहा है कि जितनी shorter wavelength होगी उतनी ज़्यादा energy होगी, उतनी ज़्यादा purity होगी. तो the more pure a person is, the more energy and the more life there is, the more vibration there is. Is that so? So again जब shorter wavelength होंगी तो उसमें क्या होता है, shorter wavelength के बीच में जो center of है उसके बीच में distance कम होता है. तो यानी जो interfering vibration है, जो interference बाहर से distraction आ सकती है वो कम होगी, disturbance कम आएगी बाहर से, और फिर it has more energy, तो ये it can reach farther and farther. तो वो Zen meditation के साथ इसको लिंक कर रहे हैं, तो हम इसको अपने साथ लिंक कर सकते हैं, फिर Zen meditation के साथ लिंक कर रहे हैं कि वो जो spiritual state of nothingness है, that state that transcends itself, what is that about, you know, what it talks about that, क्या वो भी इन वेव्स के बारे में है. अब इधर वो ब्रेन वेव्स लाए जब हम सोते हैं, यू नो, हमारी वो अल्फा बीटा गामा वो सारी डेल्टा, वो वेव्स किस तरह चेंज होती हैं जब आप सुबह उठते हैं और जब आप रात को सोने जाते हैं, और जब इवन जब आप सो रहे होते हैं, आप करवटें बदलते हैं जब आप डीप स्लीप में होते हैं, यू नो, एंड अगर अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें नींद में ये करवटें बदलने वाला ना दिया होता फिनोमेना, तो फिर क्या कहते हैं हमारी डेथ हो सकती है. Again, then he says, in सारी बात का what this mean is when we think about things in normal course, it applies in our daily life, you know, because between जब हमारी vibration of thoughts होती है, even जब आप बोल नहीं रहे, आप सिर्फ सोच रहे हो, डे ड्रीमिंग कर रहे हो, किसी और thought process में हो, so again waves के बीच में gap है, remember, so the gaps open up, it interferes with the creation of short waves.
और फिर हमारे थॉट्स में वो स्पीड ब्रेकर के तौर पे आते हैं, डिस्ट्रैक्शन के तौर पे आते हैं, फोकस नहीं करने देते और फिर वो दूर नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल इफ यू आर प्रेइंग फ्रॉम पाकिस्तान टू यमन, यमन किसी के लिए, सो how focused you are, how pure you are, how short your wavelength is, And again, the dilemma आजकल के time का, is that, कि we are not focused एक चीज पे. But when we will be focused, we will be more determination, more chances to achieve that goal. We are just distracted. काम भी कर रहे होंगे तो साथ मोबाइल स्क्रॉल कर रहे होंगे, कुछ और कर रहे होंगे. So the power of focus, the power of one goal, not multitasking. Just a throwaway question. आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? And then the ending of this is कि this basically state of nothingness ही तो vibrational technology है, HADO technology है, and it allows us to come into the contact with the cosmic information. जब अपने फिर हम higher hierarchies में जाएंगे ना, अभी तो हम अपनी lower hierarchy materialistic सबसे नीचे वाले में फंसे हुए हैं. अभी वो कहते हैं हमारी hertz में 15 to 14 hertz to 30,000 hertz में हमारी लिमिट है. अल्लाह ताला ने ईयर्स की लिमिट रखी हुई है, एंड इट्स फॉर अस, बिकॉज अगर ये लिमिट ना होती तो हम रात को सो ना सकते. एंड क्या कहते हैं, इसके अलावा जैसे जैसे आपकी एज ओल्ड होती जाती है, जैसे आप मौत कब्र के करीब होते जाते हो, आपकी ये हर्ट्स की वैल्यू भी कम होती जाती है. सो अब वो इस शॉर्टर वेवलेंथ को वाटर से कनेक्ट कर रहा है कि वी नीडेड द कम्युनिकेशन बॉक्स टू कैरी दैट इन्फॉर्मेशन, बिकॉज वी आर ऑर्गेनिक बीइंग, और हमारी हर वक्त इन्फिनिट लूप नहीं चल सकता वाइब्रेशन का. तो हमें रेजोनेट करना है, नंबर 1, और उसके लिए सेम फ्रिक्वेंसी होना ज़रूरी है, और उसके बाद प्योरिटी हमारी इंपॉर्टेंट है. तो प्योरिटी inside human, heart pure, actions pure, thoughts pure, वो सब कुछ. So to hear transmit the sounds far away, we need to use a frequency band, which is which needs to be exceeding scope of our capability. So what do we need? We need a communication box that will carry information. और वो क्या है? Of course, that is water. So water is cluster of molecules, and as water circulates around the universe, so when water reaches our counterpart, so that's when it happens, the process of echoing of resonance. अब फिर वो बात करता है अब अर्थ में भी तो जब उसने पास करना एक मीडियम है ना, जिसके थ्रू एक फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान से यमन उस दुआ ने ट्रैवल करना है. सो तो there is a contamination, there are particles, there are substances air में, तो water को contaminate भी कर सकते हैं. So you need more purity, more energy, then he was talking about Mr. Batra, Ravi Batra के साथ he wrote a book, Awareness for the Science, Universe and HADO. And then at the ending, he's talking about, EI, children में purity ज़्यादा क्यों है, और adults में कम क्यों है, what's the problem there, So here he's saying कि connection, because again वो part भी कहता है कि बच्चों में their nature के करीब, वो nature उनमें वो what will you call corruption ही आई जो हम बड़ों में adults में आ जाती है. So and again वो हदीस भी कि अल्लाह सुब्हान ताला ने हर एक को फितरत पे पैदा किया है, वो भी पेरेंट्स के ऊपर होता है, वो भी बाद में तरबियत में होता है. अनकॉन्शियस बायस कितने हैं, हम कॉन्शियस बायस कितने हैं, अगेन वो सारा कुछ माइंडफुलनेस में आ जाता है, EI में आ जाता है, हर ethical moral codes में आ जाता है. So the point here is कि जब बच्चे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जब एडल्ट्स करते हैं वही एक्सपेरिमेंट, so there is a difference. फिर क्या होता है, बच्चों को रिसर्च बिकॉज दे आर मोर प्योर और दे डोंट डाउट, वो हर चीज़ 100% बिलीव के साथ करते हैं. सो एक एग्जांपल दे रहा था कि थैंक यू और इडियट वर्ड्स के साथ ना राइस एक्सपेरिमेंट बच्चों ने भी किया, एडल्ट्स ने भी किया. सो वो कहते हैं एडल्ट्स में क्या प्रॉब्लम आता है, एडल्ट्स टेंड टू बी पेसिमिस्टिक, ओवर थिंकिंग, एंड दे लाइक टू थिंक व्हाट विल आई डू इफ इट डजंट टर्न आउट राइट. It went well this time, the next time I need to do it even better. Lack of purity about that, हमेशा ज़्यादा करना, लोग क्या कहेंगे, अपनी सोसाइटी के सारे वो इसमें आप शामिल कर सकते हैं. So the point here is it's important now to doubt yourself and to accept things as they are, be like a water, flow like a water. And the key is here is world of HADO, world of vibration, be conscious about that. और फिर वो at the end में ये बात करते हैं कि there was an elementary school girl, उसने different experiment किया था, उसने different jars पकड़े, उसमें different fruits रखे, and she picked the words, 4 different words, thank you, love,
हेलो, इग्नोर। और फिर उसने ऑब्जर्व किया कि डिपेंडिंग ऑन द वर्ड्स फ्रूट डिके डिफरेंटली। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव वर्ड्स थे, उसके साथ ज़्यादा टाइम लिया डिके करने में, और जो नेगेटिव वर्ड्स थे उसमें जल्दी फूड स्पॉइल हो गया। नाउ द पॉइंट हियर इज ईआई। हम अपने यंगस्टर्स के साथ क्या कर रहे हैं, हम अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, यू नो व्हाई वी कैन जस्ट accept them, why we need हर एक को अपनी whatever our belief system, हमने हर एक को वो ही क्यों बनाना है, why अगर पेरेंट है तो उसने अपने किड्स को अपना पेरेंट जैसा ही क्यों बनाना है। आपकी तरबियत और थी, आपके बच्चों का टाइम और है। अली के कॉल के मुताबिक मफहूम था ना कि अपने बच्चों को आने वाले वक्त के हिसाब से तैयार करना, नॉट जस्ट करंट, फॉर एग्जाम्पल 2023, नेक्स्ट 10 years और नेक्स्ट couple of years, decade. So again, our society issues again can be seen here. So the really lovely and that elementary school girl wrote to the writer, good words are created by good hearts. Again, purity, heart, that relationship, and good words change the world. Water. So you can change the water with the good words, with the good heart and purity. Then you can change the molecular structure of the world as well. And this was just linking. So just an extra. इधर ये preface introduction सब कुछ खत्म हो जाता है कि the problem with us is हमने अखलाक को छोड़ दिया है। So this was कि जब इंसान के पास सिर्फ अखलाक हो तो कुल नंबर आप उसको 1 दे दो। अगर खूबसूरती भी हो तो दाएं तरफ सिफर बढ़ा दें, now it's 10। अगर मौल दौलत है तो फिर 100। अगर हस्बैंड और स्पाउस स्टेटस तो now 1000। और अब अखलाक को माइनस कर लें, 1 को हटा दें, so it's just 000 which is equal to 0, nothing. That's the problem. We're running after the materialistic stuff, खूबसूरती, that beauty stuff. With the time ये ग्राफ में डिप्लीट होना ही होना है, ठीक है। Then we are for a mal daulat, this hierarchy, and it's आनी जानी चीज, it's never ours. Everything belongs to Allah subhanahu wa ta'ala, ठीक है। And the way we are following it materialistically, the degrees on our walls, like these things are really shallow to represent ourselves. So what really represents a human being is that akhlaq, that ethical, moral values, that fitra जिस पर अल्लाह ने आपको बनाया था. And then this husband of status. Seriously, again materialistic. So can you see these three जो हमने zero लगाए हैं, ये लगाए हैं, that is just materialistic. इन सब चीज़ों ने टाइम के साथ नीचे जाना है, डिप्लीट होना है, it's in Allah subhanahu wa ta'ala's hand. But one thing is कि जिसका ग्राफ ऊपर जाना ही जाना है, जैसे हमने कबर के करीब होना, that is akhlaq, that is that character, that code, and that is our fitra. And isn't this is the problem of my society ke saath? So jazakallah khair, and thank you for your energy, attention and time.